Students, welcome to my fourth class. In my last class, I have told about something about instantaneous rate of reaction. Now, today I am going to describe it, okay, with the help of some numericals, with the help of some examples, okay. Before this, please remember these points. तो ये points remember करना easy हो जाएगा, okay, chapter को पढ़ने के लिए. Point to remember. Okay, now let's see. Last class में भी बोला था, पहले क्लास में भी बोला था, as concentration of reactant decreases, so let's see. So negative sign is used to express the rate of reaction in terms of what? In terms of reactants. Means reactants के आगे ना तुम देख रहे हो ना एक negative sign होता है, तुम देख लेना न्यूमेरिकल्स में भी देखना, एग्जांपल में भी देखना. Okay, now पॉइंट को नोट कर लेना, समझ में आ जाएगा तुम लोग को. This is concentration, okay. Okay, now let's see next statement relating to the concentration of product. Okay, here what signs are is this is what? This is positive sign. Okay, now let's see. Now again comes to instantaneous rate of reaction, and you already know that instantaneous rate is what? Instantaneous rate is more preferred as compared to what? As compared to average rate. Okay, because generally rate of reaction does not remain constant. Okay, throughout the reaction. Okay, now let's see. Now let's see, all of you, see very carefully. Consider a reaction. Suppose this is a reaction. Now dekh lo. Consider a reaction. Okay, reaction is this one. Nitrogen is in gaseous form, react with oxygen. So product will be what? When nitrogen reacts with oxygen, product will be nitric oxide. This will be how much? This will be N. After balancing, 1, 2 will become here. So this is this. What this is? Nitric oxide. Finish? Now देख लो. As the reaction progresses, जब reaction शुरू होगा ना, so reactant will be Dj pair. ये Dj pair हो जाएगा. Okay? And what? And this will be A pair. Means what? Nitric oxide will be formed, and these two will be completely what? Completely Dj pair. ये finish हो जाएगा. After what? Final product will be formed ना. Now let's see. So how can you write down the rate of disappearance of this one? You can write like this. Now देखो, rate of disappearance. Rate of disappearance of what? Rate of disappearance of nitrogen. Okay. Concentration what? Concentration decreases. So you can write minus. And you already know this symbol is used for what? This symbol is used for instantaneous rate. Okay. So this will be how much? Concentration of N2 by how much? N2 by this is clear.
rate of disappearance of nitrogen will be dN2 by dt. So this will be obviously disappearance. ये भी तो disappearance ही हो रहा है ना देख लो. Rate of disappearance of what? Rate of disappearance of O2 minus, so this will be how much? dO2 by dt. Clear? Now let's see. So in this reaction, nitric oxide has been formed. So this will be what? This will be appearance. Okay. So rate of appearance of what? Rate of appearance of NO. Rate of appearance of NO will be what? Okay. Here nitric oxide has been formed. So this will be for product you put plus sign. So this will be how much? D what? D NO by dt. Clear? Now dekh lo. For this one, rate of disappearance. For next one, this is what? Rate of disappearance. But for this one, this will be what? Rate of what? Rate of appearance. Minus sign reactant product and plus sign means product. Now let's say, please see the reaction very carefully. तुम लोग reaction को पूरा ठीक तरह से देखो तो देखो. मैं भी देख रहा हूँ. Reaction को पूरा ठीक तरह से देखो. Here now let's say, here how many mole? Here 1 mole. Here also 1 mole. Here 1 mole nitrogen and 1 mole oxygen. Okay. After reaction, you will get what? You will get 2 mole of NO, nitric oxide. Means what? This and this appears at the same rate, okay, 1 but this appears what? At twice this rate. Now let's see. हाँ देखो मैं क्या लिखते हो देख लो. Now let's see. Since 1 mole, now देखो, since 1 mole each of nitrogen and oxygen react to produce 2 moles, okay? 2 moles of nitric oxide. Means what? Which means that N2 and O2 disappear at the same rate and what? And formation of NO will be twice as compared to this one. So we can write, हाँ हम कैसे लिख सकते हैं देखो. So we can write, okay, हाँ. So we can write this one. So that, okay, this 2 dN2 by D2. This will be how much? 2 this what? This O2 by dt, and this will be how much? This will be only d what? D NO by dt. Means what? Formation of NO is twice as compared to N2 and O2, rate of formation. Okay. Now let's say after dividing by 2, तुम 2 से divide करना. So this will be what? This will be, okay, this will be removed ना after dividing 2. Okay, so this will be how much? dN2 by dt. This will be how much? dO2 by dt. So this will be how much? This will be 1 what? 1 by 2 d what? dNO by dt. Okay. Again I repeat, 2 से divide करना. This will be removed. This will be removed. Here what? Here 2 will come here. So this will be how much? This will be 1 by 2. Okay. Now let's say in general for a reaction, हाँ अगर एक general reaction के लिए तुम लोग ये याद रखना. Okay. Now देखो.
Okay, now देखो in general for a reaction of the type. Okay, okay, now let's say agar suppose reaction is this one. Okay, now these are the main reactant A, B and C, D. These are capital A, capital B. These are the main reactant and these are the product. C and D are the product, capital C and D. So rate will be how much? Rate will be minus how much? Minus 1 by, please remember this, dA by how much? dA by dt. So this will be 1 by B dB by dt. Next will be how much? Next will be plus 1 by C dC by how much? dC by dt. And this will be how much? This will be plus 1 by D. This will be how much? dd by dt. Okay, clear? Okay, now let's see जो अभी अभी रिएक्शन सिखाया वो रिएक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके, फॉर द रिएक्शन जो अभी अभी तुम लोग को सिखाया था, फॉर द रिएक्शन. ओके, फॉर द रिएक्शन दिस विल बी हाउ मच? फॉर द रिएक्शन क्या था मेरे? नाइट्रोजन रिएक्ट विथ व्हाट? नाइट्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. दिस इज व्हाट? दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड. ओके, इस तरह से लिखोगे तो क्या होगा? देखो रेट विल बी हाउ मच? रेट विल बी minus, here 1 is there na, so this will be how much? 1 by 1, don't write, so this will be how much? dN2 by how much? dN2 by dt. This will be how much? This is 1. Okay, this is what? dO2 by dt. Okay, and this will be how much? This will be 1 by 2. Okay, 1 by 2 how much? dNO by dt. Okay, please remember this concept. Okay, for another reaction और एक reaction दिखाता हूँ. देखो फॉर द रिएक्शन और एक रिएक्शन दिखाता हूँ. फॉर द रिएक्शन ये रिएक्शन देख लो. N2 react with hydrogen, nitrogen reacts with hydrogen. Now when nitrogen reacts with hydrogen, this will be how much? This will product will be obviously ammonia na. This will be what? NH3 gas. So balance करना, this will be 2. This will be how much? This will be 3. So rate will be how much? तो इसका लिए rate कितना होगा? Rate will be what? Rate will be minus how much? Minus 1. This here 1 is there na, so this will be how much? This will be dN2 by dt. So this will be ये कितना होगा? minus 1 by 3 dH2 by dt. So this will be how much? This will be plus 1 by 2 dNH3 by dt. Clear? Now देखो this is reactant for this one, this is reactant for this one, and this is for product for this one. Okay, indirectly means what? Indirectly from this we have seen the rate of reaction can be expressed in terms of reactant or also what? In terms of product. Reactant भी हिसाब से भी लिख सकते हो, product के हिसाब से भी लिख सकते हो. Okay, now let's see. I'm going to do some numericals. Okay, related to instantaneous rate of reaction. Numerics देख लो तो. Problem. Okay, the reaction 2x erosion y plus cj is being carried out in a closed vessel. Okay, now let's see.
Okay, now let's see. The reaction 2x y plus 3z is being carried out in a closed fashion. Now, if the rate of disappearance of what? Rate of disappearance of x. Okay, इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू 0.066 mole liter per second pass. Then okay, this is reactance, so will be obviously this will be what? This will be the rate of disappearance. Okay, इसका वैल्यू दिया गया है. So what the value of appearance? Here let's see what the value of rate of appearance of y and what? Y and z. इसका वैल्यू इतना है appearance disappearance का. इसका appearance का रेट कितना होगा? y and z का. ना देखो रिएक्शन क्या था? रिएक्शन ऐसे लिखना था. देखो for the reaction y plus 3z. So rate will be how much? Rate कितना था? Rate will be minus dx by dt 1/2. This reaction minus and what? This will be dy by how much? Dy by dt, and this will be how much? This will be 1/3 dz by dt. This is 1. Okay, again I repeat. The reaction is this one, so it will be minus means reactant 1/2 dx by dt, and this will be how much? Dy by dt. 3 comes here, so this will be 1/3 dz by dt. So value of rate of disappearance of x का वैल्यू दिया गया है. Now देखो given किसका वैल्यू दिया गया है? x का देखो given. Rate of disappearance हुआ, this will obviously minus rate of disappearance dx by what? Dx by dt. What the value of this one? इसका value कितना है? इसका value, this is the value 0.066 mole liter inverse second inverse. Okay, the value of dx by dt का value कितना है? 0.066 mole liter inverse second inverse. इसका value इसका value दिया गया है. What the value of this one? इसका कितना होगा? इसका value दिया गया है इसका. Just compare this to this. इसको इसके साथ compare करना. देखो okay, this just comparison this two part. Okay, now let's say therefore ऐसा लिखना dy by dt कितना होगा? dy by dt dy this equal to how much? This equal to this na, so dy by dt write like this 1/2. This is 1/2. Okay, now in bracket minus this will be how much? Dx by how much? Dx by dt. Okay, let's see 1/2. What is the value of dx by dt? Value इतना है देखो 0.066 mole liter inverse second inverse. After solving her, this will be how much? This will be 0.033 mole liter inverse second inverse. समझ में आ गया? ना देखो ये यहाँ पर कन्फ्यूजन तो देखो ये कहाँ से आता है. ना देखो रेट ये ऑलरेडी नो तुम लोग जानते हो कैसे लिखते हैं. वैल्यू किसका दिया गया है? इसका वैल्यू दिया गया है इसका. तुमको किसका निकलना पड़ेगा? dy by dt. जस्ट कंपेयर दिस टू दिस. इसको इसके साथ कंपेयर करना बिकॉज इक्वल साइन है देयर. सो dy by dt विल बी हाउ मच? dy by dt इक्वल दिस वन. नाउ लेट्स से दिस पार्ट 1/2 this part and what remaining what minus dx by dt. The value of this one, इसका वैल्यू कितना है देखो. इसका वैल्यू देख लो 0.006 and let's say 0.006 unit is this one. After solving you will get this one. Okay, देखो इसका वैल्यू मैंने निकल दिया. Okay, now next part is what? इसका फिनिश, इसका कम फिनिश. So इसका कितना होगा? इसका देखो z का कितना होगा? Just compare this to this. इसको again इसको ना again यहाँ इसको इसके साथ कंपेयर करना तुमको आंसर ही मिल जाएगा. ना देखो नेक्स्ट लाइन पे देखो क्या होता है. अगेन लिखना, इसको लिखना dz by dt. dz by dt. ओके, कंपेयर दिस टू दिस. इसको साथ कंपेयर करना. दिस विल हम 3 विल बी हम 3 विल बी गो अपवर्ड. दिस विल व्हाट 3 यहाँ पर आ जाएगा. ना देखो दिस विल बी हम 3/2 into how much? into how much? into minus dx by dt. Clear? Okay, so this will be how much? 3/2 into what is the value of this one? Value कितना था? 0.066 mole liter inverse second inverse. So after what? After just this into this 3 into 0.006. So this will be how much? This will be 0.1. This will be how much? 9 and this will be 8. Okay, divided by 2. Clear? Okay, now let's see
This will be mol liter inverse second inverse. Clear? After divide, हाँ इसको डिवाइड करना 0.0198 by 2, इसको डिवाइड करने से कितना आएगा 0.198 by 2 कितना आएगा 0. You will get this approximately this one 0. This will be this one. This will be 0.09. It will be how much? It will be mol liter inverse second inverse. Okay. This is the rate of formation of dz by dt. मैं रिपीट कर देता हूँ, पहले से रिपीट करता हूँ. तो कैलकुलेट dy by dt, जस्ट कंपेयर दिस टू दिस, इसको इसके साथ कंपेयर करना. ओके, अगेन तुमको इसका निकालना पड़ेगा ना. अगेन उसके बाद dz by dt, अगेन कंपेयर दिस टू दिस, उसको इससे कंपेयर करना. ना देखो दिस पार्ट ना देख लो तुम लोग, दिस पार्ट dz by dt इज दिस पार्ट, ये पार्ट है. ओके, ये 3 कहाँ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर ही जाएगा ना, 3/2. सो रिमेनिंग इज दिस वन. समझ लो. उसके बाद वैल्यू पुट कर तुमको आंसर मिल जाएगा. अगर तुमको एग्जाम में कॉन्फ्यूज हुआ सर एक डायरेक्ट कैसे आ जाता है, ऐसे लिख देना एग्जाम में, ऐसे लिखना. अगर कॉन्फ्यूजन हुआ एग्जाम में सर ये पार्ट कैसे आ जाता है इतना जल्दी, ना देखो इसको पहले इसको लिखना राख में, देखो ऐसे लिख लेना 1/2. ना देखो dx by dt, पहले इसको लिखना -1/2 dx by dt. उसके बाद उसको लिखना 1/3 dz by dt. Okay, now let's see this part -1/2 dx by dt and next is what 1/3 dz by dt. मैंने इसको लिखा है, इसको लिखा. दिस इक्वल टू दिस मीन्स व्हाट, दिस इक्वल टू दिस, इसको तुम इधर भी लिख सकते हो ना. देखो मैं लिख देता हूँ 1/3 dz by dt इक्वल टू how much, इक्वल टू this is what, this is 1/2 dx by dt. Clear? Okay, now let's say from this इसको लिखना dz by dt, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना. दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1 ना, सो दिस विल बी how much 3/2 into. ओके, ना देखो माइनस how much माइनस dx by what dx by dt. ना लेट्स से दिस पार्ट को देख लो तुम लोग, पूरा देखो तो मैं भी देख रहा हूँ. देखो पूरा देखो, दिस पार्ट सेम हो गया. देखो दिस पार्ट यहाँ से डायरेक्ट करने में तुमको कन्फ्यूजन हुआ तो साइड में ऐसे लिखना, तुमको सेम पार्ट मिल जाएगा. ओके, घर में प्रैक्टिस करना. विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट डू दिस. तुम लोग विदाउट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, पूरा प्रैक्टिस करना. मैंने अभी सम रेफरेंस बुक का नाम दिया था ना, बहुत सारा न्यूमेरिकल्स मिलेगा. जितना प्रैक्टिस करेगा इतना ही तुम लोग एक्सपर्ट हो जाएगा. ओके, नाउ लेट्स नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डू अनदर प्रॉब्लम, और एक करके दिखाता है. ओके, होमवर्क भी देंगे, तुम लोग घर में करना तुम लोग. Okay, now let's say express the rate of the following reaction in terms of what? In terms of different reactants and product. Okay, मैंने बोला था ना लास्ट क्लास में, rate of reaction can be expressed in terms of reactant, also in terms of product. Okay, now let's see. After that, this is the reaction. This is capital O. Okay,
Now balance करना तुम लोग, okay, reaction को balance करना. 4, this will be how much? This will be 4, this will be 5, this will be 6. 5 to 10, okay. This is what? This is 6, 4, this will be 10, and this is what? Nitrogen 4, 4, this is 12, this is 12. Okay, reaction is okay. There is no problem in the reaction. Now this is the reaction. Okay, this is nitric oxide. Okay, now let's see. Okay, now let's see. Express the rate of the following reaction in terms of different reactants and what product. This is the reaction. Ammonia reacts with oxygen to form nitric oxide and water. Okay. In this case, rate of formation of NO. Now let's see. In this reaction, nitric oxide has been formed. The rate of formation of NO is what? इसका value कितना है? इसका value, this is the value. 3.6 into 10 to the minus 3 mol liter per second inverse. इसका फॉर्मेशन का रेट दिया गया है, तुमको किसका निकालना पड़ेगा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एनएस से. नाउ लेट्स से एनएस से तो डिसअपीयरेंस हो रहा है ना, क्या हो रहा है? इसका कुछ भी नहीं हो रहा है, डिसअपीयरेंस हो रहा है. एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर तो फॉर्मेशन हो रहा है. हाँ, देयर आर ओके टू प्रॉब्लम. फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट डिसअपीयरेंस ऑफ एनएस3 एंड फॉर्मेशन ऑफ H2O. नाउ लेट्स सी रिएक्शन इज दिस वन. तुम लोग का रिएक्शन यह दिया गया है, देखो ऐसे लिखना. गिवन रिएक्शन इज, हाँ नाउ देखो रिएक्शन क्या था? प्रोडक्ट रिएक्शन, रिएक्शन ये था, रिएक्शन लिख लेना. This is the reaction. So rate will be how much? Rate कितना होगा? Rate this part is similar to the previous part. जो पहले का रिएक्शन था ना, इस एग्जांपल के आगे सेम लिखना. रेट दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी माइनस हाउ मच? माइनस 1/4. सेम दिस विल बी हाउ मच? GNS3 by how much? GNS3 by GT. This will be how much? Minus 1/5 DO2 by dt. Clear? Okay, now let's see. This minus for reactant, this minus for reactant, and next part are what? Next part क्या था? Next part product ही था ना. ना देखो, this will be how much? 1/4 GNO by how much? GNO by gt. And this is what? This is 1/6 how much? 1/6 GNO by dt. देखो ऐसे लिख लेना पहले. हाँ, नाउ आई एम गोइंग टू डू द फर्स्ट पार्ट. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3, इसका NH3 का डिसअपीयरेंस का रेट कितना है? बट इन द क्वेश्चन फॉर्मेशन ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इसका वैल्यू दिया गया है, इसका वैल्यू दिया गया है. देख ला, दिस NO, दिस लेट्स सी 3.6 into 10 to the power minus 3. ओके, नाउ गिवन किसका वैल्यू दिया गया है? क्वेश्चन को ठीक तरह से पढ़ना तुम लोग. वैल्यू किसका दिया गया है? देखो पूरा क्लीन लिखना. देखो गिवन
given value, what is the value of rate of formation of NO? This is the value dNO by how much? dNO by dt. What is the value? 3.6 into 10 to the power minus 3 mol liter inverse second inverse. Okay, value of the nitric oxide is this one. Now let's see. First calculate number one. This is the number one part. Okay, rate of what? Number one, rate of disappearance of NSA. Now you have to calculate this part, rate of disappearance of NSA. Just compare this to this. इसको इसके साथ compare कर देना. देखो this part to this part. So rate of disappearance of NSA का कितना होगा? Therefore minus dNS3 by dt. Okay ना देखो this part dNS3 by dt 4. इसको ये दोनों को कंपेयर करना है, दोनों को देख लो. दिस टू दिस 4 कहाँ जाएगा? 4 तो इधर ही जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई. दिस विल बी हाउ मच? 4 by 4. दिस इज 4 by 4 into how much? Into this part dNO by this will be 4 by 4 into how much? dNO by how much? dNO by dt. Okay, now let's see again. I repeat this part dNS by dt. Next 4 will go here, so how much? 4 by 4 remaining was dNO by dt. So this will how much? 4 by 4. What is the value of rate of formation of NO? This is the value. Write down 3.6 into 10 to the power minus 3 mol liter inverse second inverse. So this will be what? So 4 by 4 will be cancelled. Ultimately you get this answer. 3.6 into 10 to the power minus 3 4 mol liter inverse second inverse. Clear? This is the first part. This is the first part. This is the first part. Complete. Second part is what? Rate of formation of H2O. H2O का रेट कितना होगा ना देख लो. इसका वाटर का कितना होगा? Okay. Oh. Here water is there. यहाँ पर water था. I am very sorry. Okay. Water का कितना होगा देखो. Water का कितना होगा? Number 2. dH2 by dt. Water का कितना होगा देखो. dH2 by dt. Just compare this to this. इसको यहाँ से compare कर देना. This to this. Okay. 6 will go what? 6 will go here. This will be how much? 6 by 4. dNO by how much? By dt. Again I repeat. इसका वैल्यू कितना होगा? तो नो द वैल्यू ऑफ दिस वन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर. जस्ट कंपेयर दिस टू दिस पार्ट. 6 कहाँ जाएगा? 6 तो ऊपर ही जाएगा ना. 6 by 4 ही हो जाएगा ना. देखो 6 by 4 dNO by dt 6 by 4. इसका वैल्यू दिया गया 3.6 into 10 to the power minus 3 mol liter inverse second inverse. उसको सॉल्व करना ये कितना हो जाएगा? This will be how much? 3 by 2 into how much? 3.6 into 10 to the power minus 3 mol how much? Mol liter inverse. This will be what? This will be second inverse. So this will be how much? This will be 18. This will be how much? 9, 10. This will be how much? 10.8 by 2 into 10 to the minus 3 mol liter inverse second inverse. Okay, this will be how much? This will be 5 point. Answer will be how much? This by this 5.4 into 10 to the power minus 3 mol liter inverse second inverse. Okay, this is the rate of formation of water. This is the rate of disappearance of NSA. Students एक बार याद रखना. हाँ, मैंने जो रिएक्शन लिखा था यहाँ पर ना NO लिखा था. NO नहीं है, यहाँ पर H2O था. हाँ, बिकॉज रिएक्शन तुम लोग का ऐसा रिएक्शन ऐसा था. 4NS3 G plus 5O2. Okay, next one 4NOG plus कितना था? 6H2O. ओके, रिएक्शन तुम लोग का ये था. दिस इज द डिसअपियरेंस. ये अपियरेंस था, ये ठीक मैंने लिखा था. बट ये वाटर मैंने ना वाटर की जगह एनो लिखा था. बट यहाँ पर वाटर थे. आई एम वेरी सॉरी हाँ फॉर दिस मिस्टेक. ये मैंने सिली मिस्टेक कर दिया. यहाँ पर वाटर था, वाटर. ओके, हाँ, विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन कैलकुलेट. हाँ, रेट ऑफ दिस वन NS3 का ऐसे निकल सकते हो, वाटर का ऐसे. दिस इज डिसअपियरेंस, दिस इज
फॉर्मेशन ना आई एम गोइंग टू गिव यू होमवर्क तुम लोग को मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ हाँ तुम लोग नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास हम कर देंगे तुम लोग करना देखो हाँ दिस इज फॉर योर होमवर्क देख लो This component is dinitrogen pentoxide reacts तो this will give nitrogen dioxide and what and oxygen. Please see the balancing 4 this will be 4 this will be 10 this will be 8 okay reaction is okay the reaction was studied okay was studied in a closed vessel okay Now let's see student. The reaction N2O5 dinitrogen pentoxide to give nitrogen dioxide oxygen was studied in a closed vessel. It was found that the concentration of NO2 okay NO2 increases by 2 into 10 to the minus 3 mol liter inverse in what in 5 seconds. First calculate the rate of reaction करना rate calculate करना उसके बाद रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 इसका ना रेट ऑफ डिसअपियरेंस कितना होगा N2O5 ओके अगेन रिपीट फर्स्ट कैलकुलेट रेट ऑफ द रिएक्शन का रेट कैलकुलेट करना उसके बाद N2O5 का डिसअपियरेंस का रेट कैलकुलेट करना ओके दिस इज फॉर योर होमवर्क ओके नेक्स्ट क्लास ओके विल मीट ओके बाय